अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ईरान पर इजरायली और अमरीकी जारियत के बाद खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया गया। ईरानी शोधा पर ताज़ियत और ज़ख्मियों की सेहत याबी की दुआ के साथ कमेटी ने इजरायली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए अफसोस का इजहार किया कि ये कार्रवाइयाँ ईरान और अमरीका के दरमियान जारी तामीरी मुज़ाकरात के दौरान हुई, जिनसे कशीदगी में इजाफा और सिफारतकारी के इम्कानात कम हो गए। इजलास में 22 जून के जौहरी तनसीबात पर हमलों को बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया गया और जोर दिया गया कि तमाम फरीकैन UN चार्टर के तहत सिफारती ज़राए से तनाज़ा हल करें। ईरान के हक़ दिफा को तस्लीम करते हुए फोरम की जानिब से इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तस्दीक की गई, जबकि ईरानी पार्लियामेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने की करारदाद पास कर चुकी है और अब एक ऐसा बिल लाने पर गौर किया जा रहा है कि जिसके तहत इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ईरान के दरमियान जौहरी तवानाई ताउन का मुआहिदा NPT मुअत्तल हो जाएगा। जहां एक तरफ इजराइल की गैर मशरूत हिमायत में पूरा मगरब और अमरीका खड़ा है, वहां ईरान ये मार्का अकेले लड़ रहा है। मुस्लिम ममालिक बयानात से आगे बढ़कर कोई अमली इकदामात करते नजर नहीं आते और जो बयानात दे रहे हैं उनकी हकीकत खोलते हुए अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि जो ममालिक हमारे खिलाफ बयानात दे रहे हैं या मजम्मत है, वो दरपर्दा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर थी। दूसरी जंग अजीम के बाद अमरीका ने दुनिया भर में अपनी स्ट्रेटेजिक बरतरी के लिए दर्जनों ममालिक में हुकूमतों को तब्दील करने के लिए एक नया हथियार रिजीम चेंज मुतारिफ कराया। मुतादिद मरतबा इस हथियार को इस्तेमाल किया गया। 1953 में ईरान के वजीर आज़म मोहम्मद मुसद्दिक को तेल की सनत को नेशनलाइज करने पर हुकूमत से हटा दिया गया, क्योंकि इससे बरतानिया और अमरीका के मफादात मुतासिर हुए। CIA और MI6 ने फौजी अफसरों को रिश्वत दी, प्रोपोगेंडा किया गया, बगावत को हवा दी गई और मुसद्दिक को हटाकर शाह ईरान बहाल कर दिया गया, जिसने बाद में 1989 के इस्लामी इनकलाब की राह हमवार की। 1954 में ग्वाटेमाला के सदर को लैंड रिफॉर्म्स करने पर CIA ने बागियों को तरबियत दी और फौजी बगावत को सपोर्ट किया, जिसके बाद मुल्क में फौजी आमरियत और खाना जंगी शुरू हो गई। 1973 में चिली के सदर की सोशलिस्ट पॉलिसियां अमरीका को पसंद नहीं आई, तो CIA ने बजरिया फंड्स जनरल पनोशे की बगावत को सपोर्ट किया और खूनरेज आमरियत कायम हुई। 2003 में इराक के सदर सद्दाम हुसैन पर कीमियाई हथियार बनाने का इल्जाम लगाकर अमेरिका ने हमला कर दिया और हुकूमत खत्म कर दी। सद्दाम को फांसी दे दी गई और इराक आज तक दहशतगर्दी और इंतशार का शिकार है। 2011 में लीबिया के सदर मोअम्मर गद्दाफी के खिलाफ अरब स्प्रिंग के नाम पर तहरीक खड़ी की गई और फिर नेटो ने फिजाई हमले किए और बागियों को सपोर्ट किया। मोअम्मर गद्दाफी तो मारे गए और मुल्क आज भी खाना जंगी का शिकार है। तारीख और आलमी उमूर की माहिर लिंसे और ओरकी के मुताबिक सर्द जंग के दौरान 64 खुफिया और 6 खुली रिजीम चेंज की कोशिशों में से सिर्फ 25% ने मुस्तहकम प्रो अमरीकी हुकूमतें बनाई। अक्सर ये कोशिशें आमरियत, खाना जंगी या मनफी नताइज का बायस बनी। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियां, अमरीकी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, इजरायली हमले और सदर ट्रंप के ईरान को दोबारा अजीम बनाए जैसे बयानात आलमी तशवीश का बायस साबित हो रहे हैं। माहिरीन खबरदार करते हैं कि दाखिली हिमायत के बगैर रजीम की तब्दीली तबाहकुन हो सकती है, जिससे खाना जंगी या फिर जौहरी रद्द अमल का खतरा पैदा हो सकता है। लिहाजा सिफारती हल नागुज़ीर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को दोबारा अजीम बनाने में नाकाम है तो फिर हुकूमत की तब्दीली क्यों ना हो। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कैसे रजीम चेंज की साजिश रचाने की कोशिश कर रहे हैं। बजट इजलास में अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली अमरीका और इजराइल मुर्दाबाद के नारों और पोस्टर्स के साथ कौमी असम्बली में दाखिल हुए, जबकि वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब साहब की तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज किया गया। बाद में जो हाथापाई में तब्दील हो गया। पीपल्स पार्टी जो बजट के खिलाफ सड़कों पर आने का इंदिया दे रही थी, वो आज बजट इजलास में वजीर खजाना की तकरीर के दौरान इस्तीफा करते हुए नजर आई और हैरान कुन तौर पर तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बजट की हिमायत का ऐलान करते हुए अपनी तोपों का जो रुख है वो तहरीक इंसाफ की तरफ मोड़ दिया। कहा, हम आवाम की बेहतरी की बात करते हैं और PTI कहती है कि कैदी को रिहा करो। दावा किया कि लोगों का मुतालबा है कि इमरान खान को जेल में रहने दें। आपके वोटर्स, आपके वर्कर्स समझते हैं उनका ये मुतालबा होगा कैदी को रिहा कर, लेकिन बाकियों का ये मुतालबा नहीं है। इनका तो ये दूसरा मुतालबा है कि उनको वहीं के वहीं रखें। अगर आप इस इशू के अलावा कोई इश्यूज उठाएंगे, आपके कुछ लोग मिलेंगे जो उन इश्यूज को, अवाम के इश्यूज को सपोर्ट करने के लिए तैयार होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ने रद्दमल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की मुनाफकत नहीं चलेगी। एक तरफ बिलावल बजट को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि किसान तबाह हो गए। बिलावल समझते हैं कि इंग्लिश बोलकर लीडर बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा।
ये पॉलिसी मुनाफिकाना पॉलिसी नहीं चलेगी। बिलावल भुट्टो कंफ्यूज आदमी, आज जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दफा बजट में स्पीच किए, एक तरफ वो तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जो है ना एग्रीकल्चर के किसानों का बदहाल है, बुरा हाल है, पूरा 50% शेयर आपका हुकूमत में। क्या ये आवाम को बेवकूफ समझते हैं? बिलावल भुट्टो का रवैया अगर ये समझता है कि इस तरह अच्छी इंग्लिश बोल के वो कोई बहुत बड़ा लीडर बनता है। आईनी मजबूरी है, बजट पास करना जरूरी है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर साहब का कहना है कि हुकूमत चाहती है बजट पास ना हो और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर हुकूमत खत्म कर दी जाए। बानी पीटीआई जब कहेंगे असेंबली तहलील कर दूंगा। ये एक वाज़ेह पैगाम है कि ये इख्तियार इस असम्बली का, इस हुकूमत का सिर्फ एक शख्स के पास है जिसका नाम है इमरान खान। वो आज हुक्म करे कि असम्बली खत्म करो। मैं आपको यहाँ पर यकीन दिलाता हूँ अपने पूरे पार्लियामान की तरफ से कि जितना टाइम मुझे एक लफ्ज और दूसरे लफ्ज कहने में लग रहा है, उससे पहले इंशाल्लाह मैं इमरान खान के हुक्म के मुताबिक देंगे असम्बली को खत्म कर भी सकता हूँ और मैं कर भी दूंगा। हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फवाद इज़दी, हु इज प्रोफेसर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान। सलाम डॉक्टर इज़दी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Dr. Izadi, US President Donald Trump claims of total destruction. With Operation Midnight Hammer, US claims to have completely and totally obliterated Iran's enrichment facilities. Were they able to do so? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Iranian government officials are not going to give that damage assessment because if in fact the damage is not extensive, that may give the Americans an excuse to attack again. So I think that's going to be kept secret. What we do know for sure is that a lot of material, centrifuges, enriched uranium, other things of value were removed from these sites because people expected the Americans to attack. So I think, as Iran's Deputy Foreign Minister said, Iran will continue its nuclear program, and this type of attacks I don't think will result in Iran giving up its nuclear program. And Dr. Izadi, does Iran expect more of such strikes from the US, or do you feel that the President of United States, Donald Trump, with these recent strikes was trying to convey a message and to put a pressure on Iran perhaps to be back on the negotiating table? Do you expect more strikes from them? You know, the code name for strikes 2 nights ago were Midnight Hammer. And what Trump has done is that he has taken that hammer and smashed the negotiation table. Iran was negotiating with the other side in good faith. In fact, the Israelis attacked Iran 2 days before the next round of negotiations. Iran never left the negotiating table. The negotiating table is smashed by the United States. And they may attack again, yes. You know, they have been engaging in a genocide in Gaza for 19 months. And they want to see a repetition of what they have done in Palestine and in Lebanon, in Iran. But given the fact that we have this culture of resistance, given the fact that Iran's military is capable, I think they're going to fail. With reports also coming in that they've tried to attack the nuclear facility at Fordo yet again. How will, Dr. Izadi, how will Iran retaliate now? Because there have been a lot of concerns of Iran's retaliation. And my opinion to this was perhaps Iran's restraint of not targeting any of the US bases in the Gulf was perhaps a positive gesture from Iran, and perhaps Iran wanting to recenter itself on the negotiating table. But after the US strikes, could that also be one of the options that Iran may consider and may go for the US bases in the Gulf? Iran has the right to do that under Article 51 of the UN Charter. If a country attacks you, you have the right to respond. And these military bases are actually good targets because they're much closer to Iran. There are population centers. Many soldiers are stationed there, about 40,000 soldiers in 10 American bases.
and it's very difficult to intercept Iranian ballistic missiles for short distances. So every missile is going to hit its target. Iran has not done that yet. Iran has the right to do that, given the fact that Americans not only attacked Iran, they boasted about their attack. Whether Iran will choose that option, I don't know. There are other options that Iran has. For example, since this was a team attack on Iran, this is what Trump said, attacking Israel more forcefully would be attacking the United States, since they're not going to be separated. Closing the Strait of Hormuz would be another option that Iran has. Iran has many friends in this neighborhood, so those forces may become more active. We had the government of Yemen announcing yesterday that they are going to target American ships from yesterday. They already sent a missile to occupied Palestine last night. And there are a number of other options that cannot be discussed over an interview, but Iranian leaders are looking at different options that they have, because, Iran's population is 90 million. The government has a responsibility to protect these people. This is the first time in history that two nuclear states attacked a non-nuclear state in the middle of negotiations. So Iranian leaders are looking at the options that they have. So you were saying, Dr. Izadi, closing the choke point, that is the Strait of Hormuz, could be one of the options that Iran may consider, and the parliament has already given approval for that. I think majority of parliament members approve of that. There are other options. For example, letting ships pass with a fee, and then stopping the ships that Iran thinks they should not pass. So it could be a total closure. It could be a partial closure. This is not an option that Iran wanted to take, but there. It's being compelled. Iran is being compelled to go for such moves, and this again being Iran's most powerful deterrence tool at the moment. Is the Supreme National Security Council of Iran assessing the feasibility and the implications of choking this choke point? Yes, they're looking at it, when to do it, how to do it. There are different options when it comes to the Strait of Hormuz, and they are looking at it as we speak. And the kind of consequences and implications it will have on the global scale. Dr. Izadi, it's being said that the broader agenda of Israel, and obviously the Israel strikes, are backed by US, and with US now directly getting into this conflict, the broader aim perhaps could be of regime change. And with the United States president now saying that why wouldn't there be a regime change? He just posted on his profile that why wouldn't there be a regime change? What are the sentiments within Iran regarding this, and with Iranian authorities claiming more than 450 civilian lives that have been resulted in these latest strikes by Israel and US collectively? What are the sentiments within Iran, and what do the people say? This is what Trump said today. Israeli defense minister said the same thing 3 days ago. So this is what they are doing is actually a regime change attack, because if they were worried about Iran's nuclear program, they would not leave the nuclear agreement of 2015. Under that agreement, Iran was allowed to only enrich at 3.67%, which is not going to result in making a bomb. And there were very extensive inspections. So they are not worried about Iran's nuclear program. We had the US intelligence community 3 months ago in March publishing a report saying 3 things about Iran's nuclear program. The first thing they said that Iran doesn't have a nuclear bomb. The second thing was that Iran doesn't have a nuclear weapon program. And the third thing was that Iranian leaders have not decided to have a nuclear weapon program. This is what the US intelligence community said. The director of the International Atomic Energy Agency said this, the same thing
yesterday, day before yesterday, in different interviews, that with all the inspections that they have had on Iranian nuclear sites, they have not found any nuclear weapon program. IAEA has a budget of $39 million, and they spent $22 million out of that $39 million inspecting Iran. Iran is the most inspected country. So the real issue is regime change, and they're publicly stating that. The only problem they have is that when they asked the Iranians to come to the streets, this is what Netanyahu did on the second day of attacks. He had a message for Iranian people. He asked them to come to the streets and unite, and they did, against him and against Trump. So they are unifying Iranians, even the people who did not like the government. They don't like their country to be attacked. Iranians like Iran, Pakistanis like Pakistan. When India attacks Pakistan, nobody likes it. They may not like the current government in Pakistan, but they don't like their country to be attacked. Absolutely. And the external aggression, Dr. Izadi, you very rightly pointed out, the external aggression just unites the entire nation. There's this rally around the flag effect, and there's this nationalist sentiment. We are in contact with the students at the University of Tehran, the different people in the streets. What we see is a sense of national unity, especially when the other side who's asking you to do regime change are genocidal. People have been seeing the pictures from Gaza. They fully understand that Mr. Netanyahu is not interested in human rights, and they're not going to fall for that trap. Remember, Americans did regime change once in Iran in 1953, overthrowing the democratically elected government of Mohammad Mossadegh, and the result of that did not do well for the United States. So overall, I think they have a lot of pipe dreams. They're going to fail, and Iran is going to resist. The Iranian military is going to resist. People are going to resist. And of course, Iran's neighbors like Pakistan can be very helpful. They have been helpful, and they can be helpful in terms of praying for their neighbors, for Iranian neighbors, praying for them, and keeping in touch through social media, message of solidarity, other things that can be done to make sure that Trump and Netanyahu understand that people in this part of the world are united against US hegemony. Right. Thank you so much, Dr. Izadi, for joining us. Program में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए.